Again, you're most welcome on the same channel Easy Maths Learning. If you have not subscribed it, please subscribe now because it is only the channel. फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 9, 10th, 11th, 12th के लेक्चर की सीरीज मिलेगी जिसमें पूरा बोर्ड प्लस मेंस लेवल कवर होगा. Now come on the second lecture of the real numbers. Real numbers, what do you mean by real numbers? यहाँ पे आके हम देख रहे हैं कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है. सी ऑल द रेशनल्स एंड irrational numbers together are called real numbers. The set of real numbers is denoted by capital R. Okay, a number scale is there. See, very first time write expressing R, real number x, such that x belongs to Q union Q bar dash, or x is lying between minus infinite to infinite. In the sense, all the numbers are included in that set. A number line is there over which the numbers from minus infinite to plus infinite, all the numbers are here. 0, 1, 2 and so on, minus 1, minus 2 and so on. I am just representing only the integers, but include all the numbers between 0 and 1. So these all are the real numbers. Okay, real numbers, all the numbers are real number. Rational, irrational numbers, all the rational as well as irrational numbers are the real numbers. So that you must note down this. This is the most important. Exactly, it is the chapter real numbers. So I hope you pause it and note down this. Now, if we are talking about some special notes of the real numbers, as you know, real numbers are rational and irrational. So definitely we are talking about the rational or irrational numbers. See that very first thing is that the sum or difference of two irrational numbers will be another irrational number. Another irrational number. It is simple. The sum, difference, product or division of two rational number, two or more rational numbers will always be a rational number. Okay, now the product or division of two irrational number may or may not be an irrational number. In the sense, you are just multiplying two irrational numbers or dividing two irrational numbers. Sometimes you may get irrational number, sometimes you may get rational number. Last note that the sum, product
difference or division of a rational and an irrational number will always be an irrational number. See, you need to understand these 4 points. Very special points are there. If suppose you are just adding two irrational number or subtracting, अगर दो irrational number को आप add कर रहे हैं या subtract कर रहे हैं तो आपको irrational number ही मिलेगा. Means √2 plus √3, it is an irrational number. 3√2 minus 4√3, it is another irrational number. Okay. The sum, difference, product and division of two rational number, you will be getting rational number. This you know very well. कोई भी rational number को add करेंगे, subtract करेंगे, divide करेंगे, multiply करेंगे, आपको एक rational number ही मिलेगा. Now, product and division of two irrational number may or may not be. देखो, अगर 2√3 is divided by √3, then you will be getting 2, which is a rational number. Whereas, अगर 2√3 आपने √2 से divide किया तो आपको irrational number मिलेगा. लेकिन sum, product, division and difference of one rational and one irrational number means 2 plus √3, 2√3 by 7, 2 minus √5, ये सब जो नंबर हैं ये सारे नंबर irrational होंगे. Please keep that in mind. So note down all the points again by pausing the video. These are the special notes about the real numbers. Now we are coming over some questions. Exactly यहाँ पे irrational numbers से related कुछ questions हमको करना जरूरी है. See, here we need to understand one theorem. एक theorem है वो समझना बहुत जरूरी है. If a square divides q, अगर a स्क्वायर कोई q को डिवाइड कर रहा है, then a divides q, a भी q को डिवाइड करेगा. as you know, suppose some a is there and it is b into b into b into b into b into c into c, then definitely it will be divided by b, as it is divided by b square, because it is composed by b square. So that's very simple. ये पता होना चाहिए आपको. इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Now how will we prove that? Suppose the question is, it is very important question. Please note down this fast. ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है. Prove that. How will we prove? Prove that √3 is not a rational number. This is most important question. √3 is not a rational number. See that. How will we prove it? Proof. The proof is very easy. इसका जो proof है बहुत आसान है. See, if possible, we'll just start the question with the contradictory assumption. यहाँ पे हम contradictory assumption लगाएंगे कि if possible, then assume that √3 is a rational number. √3 को हमने मान लिया rational number, then definitely it is obvious, then √3 may be written as p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime. मीन्स p एंड q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. चलिए इस q का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो p विल बी इक्वल टू √3q. सो ऑन स्क्वायरिंग p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q स्क्वायर. मीन्स
here it is clear that p is a multiple of 3. It is clear that p is a multiple of 3. अभी मैंने बताया था कि if p square is being divided by 3 then p will also be divided by 3. So we can write it is clear that p is a multiple of 3. So let यही मान लेते हैं हम कि p is equal to 3k, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3k whole square 3q square, so 3q square is equal to 9k square. ये 3 यहाँ जाएगा तो q square will become 9k square upon 3. So q square कैंसिल हो जाएगा यहाँ 3k square means q is also multiple of 3. यहाँ लिखेंगे it means q is also a multiple of 3. q भी 3 का मल्टीपल है. Now I am just solving it here. मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है. It means q is also multiple of 3. अभी देखिए यहाँ पे एक चीज निकल के आई है, p is a multiple of 3. इस लाइन को गौर से पढ़िए, p is a multiple of 3. यहाँ क्या आया है, q is a multiple of 3. और यहाँ हमने क्या एज्यूम किया था, p and q are co-prime. If p and q are co-prime, try to understand that. अगर p and q co-prime हैं तो p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता. Whereas यहाँ क्या आ रहा है कि p और q दोनों में एक फैक्टर कॉमन है and that is 3. ये क्या है, it is a contradiction means our assumption जो हमने माना था assumption was wrong, मतलब हमारा assumption wrong था and hence इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 is not a rational number. See, this is very simple question. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, you need to understand it. बहुत सिंपल क्वेश्चन है and every year this is being asked in the examination. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. हमने कॉन्ट्राडिक्टरी assumption का यूज किया. If possible then assume that √3 is a rational number. अगर √3 रेशनल है तो इट में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. q 0 नहीं है, p q को प्राइम है. को प्राइम है मतलब p और q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. हमने यहाँ q का मल्टीप्लाई किया तो √3q p हो गया, स्क्वायर किया p स्क्वायर 3q स्क्वायर हो गया. जब ये 3q स्क्वायर हो गया तो क्लियर है कि q p जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 3. तो हमने एज्यूम कर लिया p को 3k रखा, 9k स्क्वायर हो गया. q स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3k स्क्वायर मींस q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3. अगर p भी मल्टीपल है 3 का, q भी है तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारा assumption गलत था and √3 is a not a rational number. Okay, so please note down this fast. I'm just make pause that video and note down. This is most important question as I have told. So this is quite simple question. Now if suppose the same kind of question is being asked in a different way, अगर ऐसा ही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है, सपोज हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर दे दिया कि प्रूव दैट √3 प्लस 2√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर नहीं है. सो दैट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. यहां हम कंसीडर करेंगे कि √3 और √5 इरेशनल है. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अगेन विद द सेम कॉन्ट्राडिक्टरी assumption. If possible then assume that √3 plus 2√5 is a rational number. It is a rational number. अभी मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लीज चेक इट. तो सारा पूरा क्वेश्चन एक बार में हो जाएगा. देन
वी कैन राइट, अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं that √3 plus 2√5 is equal to P upon Q, such that Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. On squaring यहाँ क्या हो जाएगा, √3 plus 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. यहाँ क्या होगा, √3 स्क्वायर इट इज 3, 2√5 स्क्वायर इट इज 5 for the 20 plus 2 multiplied by 2 multiplied by √3 into √5 means 4√15 is equal to P square upon Q square. सभी को मैं ट्रांसफर करूंगा, दिस विल बिकम 23, तो 23 plus 4√15 is equal to P square upon Q square. ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, 4√15 is equal to P square upon Q square minus 23. So √15 is equal to P square upon 4Q square minus 23 upon 4. तो यहाँ पे क्या है, you can see that here √15 is an irrational number, whereas P square upon 4Q square minus 23 upon 4, the sum and difference of two rational number will be a rational number, whereas this is a rational number which is a contradiction, hence so our assumption was wrong, and hence because of our assumption was wrong, √3 plus 2√5 is not a rational number, hence proved. QED. Please note down this fast. Understood? I hope you all understood that question. It is very simple question. From here you may note down that we have proved, we did all the problems till the रियल नंबर्स. नाउ इसके बाद अब यूक्लिड्स से थर्ड जो आपका लेक्चर है उसमें यूक्लिड्स लेवा आएगा. फोर्थ लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लीज नोट डाउन दैट फास्ट. यू मे पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and generally asked in the examination. Now I would like to say you that this is an important series of the NCERT 10th board क्लास. इज इट क्लियर? 10th बोर्ड के लिए NCERT पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है लेक्चर्स की, इसलिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इजी मैथ लर्निंग. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे. प्लीज नोट डाउन दैट, मेक अ पॉज एंड नोट डाउन दैट.